update of the current status of MSMEs in India and some of the initiatives that Government of India has taken. First of all, I will like to share that despite the global headwinds, there are more than 20 lakh micro, small and medium enterprises that have registered on the Udyam portal of the ministry in the month of February and March. So this is a sign of resilience of the MSMEs of India, and presently the total number of MSMEs registered with us, that number has crossed more than 8 crores. The credit flow to the micro, small and medium enterprises is one of the core areas on which we work, and I am happy to share that the credit outstanding with the micro, small and medium enterprises, it stands at over 36.7 lakh crores. And in the last one quarter, that is January, February and March, the growth in credit flow to the MSMEs has been 23.5%. I also want to share that the RBI has increased the limit for collateral-free lending. Initially, this limit was up till rupees 10 lakh. It has been doubled now. And now the new limit is 20 lakh for the micro and small enterprises for collateral-free lending. And this has come into effect from 1st of April 2026. In the months of February and March, the total credit guarantees that we have given to the micro and small enterprises is more than 5.27 lakhs, and the total value of these credit guarantees is more than 92,000 crores. I also want to share that in order to enhance the liquidity flow to the micro and small and medium enterprises, TREDS platform has been developed. This platform has been in operation in the last 4-5 years, and the number of transactions and the volume of bill discounting that has increased from 4,300 crores in 2022 to more than 7 lakh crores as of now. And I'm also happy to share that in the months of February and March alone, the total invoice discounting has been more than 85,000 crores. So that is the liquidity that has gone to the micro and small enterprises. I also want to share that as far as the raw material supplies to the micro, small, medium enterprises are concerned, we have a PSU, National Small Industries Corporation, and through that, more than 1.05 metric ton of raw material has been made available to the micro, small, medium enterprises. And if we look at the figures of March only, in the month of March, more than 37,000 metric ton of raw materials have been provided to the MSMEs. And if we compare it with the figure of March of the previous year, so this growth comes to 12.5%. So as far as distribution of the raw materials is concerned, the basic raw material that is being provided through NSIC includes iron and steel, aluminium, and also coal. Besides this, a relief scheme has been rolled out by the Department of Commerce under the Export Promotion Mission. This scheme has been made effective from 19th of March 2026, and this scheme basically provides reimbursement of up to 50% of the additional freight and insurance surcharge to the non-ECGC MSME exporters. And the ministry continues to engage with all the stakeholders. We believe in whole of government approach, and the situation is being closely monitored by the Ministry of MSME, and we are committed to support the micro, small and medium enterprises in India. Thank you. Thank you, Dr. Rajneesh. Now over to Sujata. नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते भारत की एनर्जी सप्लाईज भी अफेक्ट हुई, किंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए और जिसके चलते
डोमेस्टिक पीएनजी और एलपीजी कंज्यूमर को प्रायोरिटाइज करते हुए 100% सप्लाई इंश्योर की गई है। इसके अलावा सीएनजी ट्रांसपोर्ट भी 100% इंश्योर किया गया है। डोमेस्टिक रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया है और इसके अलावा बुकिंग इंटरवल को भी अर्बन एरिया में 25 दिन और रूरल एरिया में 45 दिन किया गया है। इस सप्लाईज के अफेक्ट होने की वजह से कमर्शियल सप्लाईज को, एलपीजी सप्लाईज को 70% तक रेस्टोर किया गया है और यहाँ पर भी हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रायोरिटाइज किया गया। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज, फार्मा, स्टील, ऑटोमोबाइल, सीड, एग्रीकल्चर एटसेट्रा को भी प्रायोरिटी दी गई है। 5 किलो के सिलेंडर्स की संख्या को डबल किया गया है और ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस जैसे कि कैरोसिन और कोल को भी ऑफर किया गया है। डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई इज नॉर्मल। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग्स आर हाई एट 98% एंड 93% ऑफ द डिलीवरीज आर थ्रू ऑथेंटिकेशन कोड। कमर्शियल सप्लाई जैसा कि मैंने आपको बताया अफेक्ट हुई, परंतु सप्लाई चेन डिसरप्शन को अवॉइड करने के लिए, शॉर्टेजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज को भी अवॉइड करने के लिए भारत सरकार ने एक कैलिब्रेटेड मैनर में 70% तक सप्लाईज रेस्टोर की हैं और इसके चलते 14 मार्च से लेकर अब तक लगभग 1,34,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। इसमें लगभग 8,000 टन ऑटो एलपीजी है। इस संबंध में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि फरवरी के महीने में प्रतिदिन जो ऑटो एलपीजी का सेल था बाय पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी वाज अराउंड 177 टन, जो अब बढ़कर लगभग 282 टन पर डे हो चुका है। 5 किलो के सिलेंडर की सेल भी काफ़ी इंक्रीज की गई है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा लगातार अवेयरनेस कैंप चलाए जा रहे हैं। 3 अप्रैल से लगभग 5,000 कैंप ऑर्गेनाइज किए गए हैं और इन कैंप्स में लगभग 57,800 सिलेंडर्स की सेल हुई है। कल 583 कैंप किए गए और इन कैंप में 8,575 सिलेंडर्स की सेल हुई है। 23 मार्च से लेकर अब तक लगभग 14,60,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है। नेचुरल गैस में फर्टिलाइजर्स को 95% तक गैस सप्लाई की जा रही है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर्स इंक्लूडिंग सप्लाईज थ्रू सीजीडी नेटवर्क इज ऑल्सो एनहांस्ड टू 80%। सीजीडी एंटिटीज को भी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज को 100% सप्लाई देने के लिए कहा गया है और पीएनजी नेटवर्क में जो भी स्टेट्स सपोर्ट कर रहे हैं उनको एडिशनल एलपीजी, कमर्शियल एलपीजी दी जा रही है और ऐसे स्टेट्स की संख्या 21 है। मार्च के महीने से लेकर अब तक लगभग 4,50,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैस दी जा चुकी है और लगभग 5 लाख नए कंज्यूमर्स भी रजिस्टर हुए हैं। 34,200 से ज़्यादा ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनके पास पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन दोनों थे और उन्होंने अपने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर किया है। हमारे रिटेल आउटलेट्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है और कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है। क्रूड इन्वेंट्रीज आर एडिक्वेटली मेंटेन्ड एंड सो इज द रिफाइनिंग ऑपरेशंस। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं 24 मार्च को एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और उसका उद्देश्य था कि जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक की सप्लाई की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना। इसी क्रम में भारत सरकार ने एक ऑर्डर भी इशू किया जिसमें C3 और C4 स्ट्रीम्स को पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक के लिए अलॉट करने की बात की गई। इसी क्रम में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से प्राप्त रिक्वेस्ट के क्रम में लगभग 1,000 टन पर डे एलपीजी पूल से C3, C4 मॉलिक्यूल्स को फार्मा और केमिकल सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए एलोकेट किया गया है।
9 अप्रैल से अब तक लगभग 1800 टन ऑफ प्रोपिलीन हैज बीन सोल्ड। ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने के लिए सभी स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम सेटअप किए जा चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन भी किया जा चुका है और कई सारे स्टेट्स के द्वारा रेगुलर प्रेस ब्रीफ भी दी जा रही है। कल लगभग 2100 रेड और सरप्राइज इंस्पेक्शंस की गई हैं। ओएमसीज ने भी सरप्राइज इंस्पेक्शन किया और अब तक लगभग 237 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी इम्पोज की है और लगभग 58 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया है। अंत में मैं आपके माध्यम से देशवासियों को ये कहना चाहूंगी कि हमारे पास पर्याप्त सप्लाईज उपलब्ध है और जरूरत के अनुसार ही एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का क्रय करें। धन्यवाद। Thank you, Sujata. Over to Shipping Ministry. नमस्ते। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, MEA, भारतीय मिशन तथा मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर सी फेरर के वेलफेयर तथा अनइंटरप्टेड मैरीटाइम ऑपरेशन सुनिश्चित कर रही है। वर्तमान में पर्शियन गल्फ रीजन में सभी भारतीय सी फेरर सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटे में इंडियन फ्लैग्ड वेसल से संबंधित कोई इंसिडेंट की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। डीजी शिपिंग कंट्रोल रूम में अब तक 6449 कॉल तथा 13343 से अधिक ईमेल हैंडल किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 157 कॉल और 215 ईमेल प्राप्त हुए हैं। मिनिस्ट्री ने डीजी शिपिंग के माध्यम से अब तक 2337 भारतीय सी फेरर की सेफ रिपेट्रिएशन फैसिलिटेट की है, जिसमें से 75 सी फेरर को पिछले 24 घंटे में वापस लाया गया है। भारत के सभी पोर्ट्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है तथा किसी प्रकार के कंजेशन की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। धन्यवाद। Thank you, Mukesh ji. Over to you, Randir ji. Thank you, ma'am. Our diplomatic engagement in the context of the West Asia conflict continues. Yesterday, as you know, Prime Minister received a call from President of the United States, President Donald Trump. The two leaders reviewed the substantial progress achieved in India-US bilateral cooperation. Both sides remain committed to further strengthening our comprehensive global strategic partnership in all areas of cooperation. The two leaders also discussed the situation in West Asia and stressed the importance of keeping the Strait of Hormuz open and secure. Yesterday, External Affairs Minister spoke with the Foreign Minister of Israel and discussed various aspects of the conflict in West Asia. He also spoke with the Foreign Minister of Australia, where the two leaders shared views on the conflict in West Asia. Today, External Affairs Minister participated in the ASEC Plus meeting convened by Japan to discuss supply chain disruptions in the energy markets. He underlined India's strong commitment to safe and unimpeded transit passage of maritime shipping. He emphasized that attacks on merchant shipping are completely unacceptable. He also underlined that global growth demands that energy markets are not constricted. As a major energy consumer, India will work with like-minded partners to develop supply chain resilience, he added. Our diplomatic outreach to countries in the Gulf continues, and I have kept you abreast with all these developments. On the directions of the Prime Minister, External Affairs Minister visited UAE, that happened on Saturday and Sunday last, and the Minister of Petroleum visited Qatar, that happened last week. We have kept you informed of the discussions that have happened, sharing assessment of developments in the ongoing conflict, strengthening India's energy security, and ensuring the welfare of our diaspora were key to these visits. Thank you very much. Asim ji. Good afternoon. We continue to monitor developments in the Gulf and West Asia region. Our efforts are focused on ensuring the safety, security, and welfare of the large Indian community in the region. Our dedicated special control room in the ministry is operational and is working in close coordination with our missions. We are in constant touch with the state governments and union territories for sharing information and to coordinate our efforts. Our missions and posts are proactively assisting our citizens. They are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance
and address queries. They remain in close contact with the local governments. Updated advisories are being issued with information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and various welfare measures being undertaken to support our community. They are actively engaged with the resident Indian community. Our ambassadors in the region are regularly interacting with the various Indian associations, organizations, professional groups, and Indian companies to address their concerns. We are according high priority to the welfare of Indian seafarers in the region. Our missions are extending all assistance to them, including coordination with local authorities and agencies, extending consular assistance, facilitating communication with families in India, and assisting requests for return to India. An update on the status of flights. Flights continue to operate from the region to India from countries where airspace is open. Since February 28th, around 984,000 passengers have traveled from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled commercial flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Today, around 100 flights are expected to operate from UAE to India. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. With the Qatar airspace partially open, Qatar Airways is expected to operate around 10 flights to India today. Kuwait airspace remains closed. Jazeera Airways of Kuwait and Kuwait Airways continue to operate non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. Due to airspace closure, we continue to facilitate travel of Indian nationals from Kuwait through Saudi Arabia to India. Bahrain airspace is open. Gulf Air of Bahrain has announced that they are planning to start limited flight operations from Bahrain to India. Gulf Air is operating non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. We continue to facilitate travel of Indian nationals from Bahrain through Saudi Arabia to India. Iraq airspace is open with restricted flight operations. We continue to facilitate travel of Indian nationals from Iraq through Jordan and Saudi Arabia to India. Our embassy in Tehran has so far facilitated movement of 2,323 Indian nationals from Iran to Armenia and Azerbaijan for onward travel to India. These include 1,028 Indian students and 657 Indian fishermen. Israel airspace is partially open with restricted flight operations. We continue to facilitate travel of Indian nationals from Israel through Jordan and Egypt to India. Thank you. Thank you, Asimji. Now we'll take questions. First row, 194, 54, 4, 67, 46, 16 in the second row. Hi, Sukal from the Indian Express. I have a question that Mangal sir or Randhir sir can take. Tanker data shows that there is this Iranian oil tanker that arrived unannounced without a declared destination or a declared buyer near the coast of Gujarat yesterday. If we could get any confirmation on that, and what is the government's view on this, considering that none of the Indian refiners had chartered this tanker per se. Thank you. Thank you. Amar Zaidi from PTA. My question is to Sujata ma'am. The propylene that is being enhanced for pharma and chemical sector, is it 1,000 additional or 800 ton has been made 1,000 tons? Thank you. Good afternoon. This is Rajesh Roy from Bloomberg. Question for Randhir sir. We understand that India doesn't provide a negotiating table for war. But when two big leaders of the world spoke yesterday, what was the assessment of role that India can play to bring the conflict to an end, given the fact that it enjoys a great bonhomie with Israel, Iran, and even US? Secondly, as the US sanction waiver on buying Urals has lapsed, and the same will come to an end on Israeli crude also. So, Iranian crude also. So how is India looking to secure its energy needs? 67 here in the first row. Hi, Sapna Das from CNBC TV 18. My question first is to MEA. Basically, has India been invited or we are expected to join the UK France summit?
And second row. And sorry, ma'am. To Dr. Rajneesh, there's a lot of chatter about a new credit guarantee scheme that's upcoming. Probably DFS is already at work. So can we have some outline, some details as to how this is going to be different from the ECLGS that was there during COVID, or some perspective which is possible? How soon can we expect cabinet clearance? Thank you, sir. Thank you, ma'am. And we'll take third row, 16, 214, and 189, 277. Good afternoon, Saptaparna Ghosh from the Hindu. A question to Sujata ma'am. We have been reading about a price stabilization fund being in works for retail fuel, petrol and diesel. If you could, shed light on that. And another question to you ma'am, and I would want to extend that to Randhir sir as well. You mentioned in your address about India engaging with like-minded nations for energy, supplies. So in that light, just wanted to ask if that includes Argentina for LPG, and if we are looking to extend our energy relations with the United States as well. If you could please share some perspective on that. नमस्कार, मैं प्रदीप टोटल न्यूज़ से। मेरा सवाल आपसे सुजाता जी पहला ये कि जो बुकिंग स्टेटस है, जो एलपीजी की बुकिंग हो रही है, वो हर दिन कितना स्टेटस आ रहा है, और क्या इसमें जो परेशानी आ रही है ऑनलाइन में भी, और जो व्हाट्सएप नंबर आपने जारी किया है उस पर भी शिकायतें आई हैं, ये क्या स्टेटस इसका जारी करेंगे अगर आप? दूसरा, रणधीर सर आपसे एक सवाल है मेरा, जो ट्रंप और प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, इस पर बातचीत हुई है, ये जानकारी प्रधानमंत्री ने दी है, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार हमारे नाविक वहां फंसे हुए हैं, लंबा समय हो गया है, अनिश्चित काल। क्या ये संकट आपको लगता है? तो सेकेंडरी ऑप्शन भी कुछ प्लान है क्या सरकार का? Sir, I am Deepak from Times of India. My first question is to Sujata ma'am. I think if we recall correctly, about fortnight back when this excise duty rollback had happened, it was said that it will be reviewed after 15 days. So it is more than 15 days. What is the status? Will it be continued? Excise duty, special excise duty. So I think it's more than 15 days. And the CBDT chairman had said that it will be reviewed after 15 days. And second question to MSME ministry, sir. Usually everyone says that, and industry also says that if there is a crisis, we have stock for 40-50 days to manage. So the major shock is not felt in the first 40-50 days. So are we seeing some kind of problem coming up, and how are you preparing maybe after 5-6 days or a week? Next. मैं जयप्रकाश हूँ दैनिक जागरण से। मेरा सवाल रणधीर सर से। सर, अमेरिका ने जो हॉर्मुज में ब्लॉकेड की घोषणा की है, उसको भारत सरकार कैसे देखती है? कृपया इस बारे में बताएं सर। 2 number, then 189 and 277. Hello, Rituraj here from Mint. Sujata ma'am, my question is, Secretary Petroleum had recently said about scaling up the biogas program to streamline all the initiatives which several ministries have and bring it into one single platform. So, can you give some details in terms of scaling up CBG and biogas production and adoption? Hello everyone, this is Rishi from the Business Line. I have a question for the Petroleum Ministry, for Ms. Sharma. Ma'am, this is regarding the rediversion of C3 and C4 streams. These are specialized industries, and on 8th, I think it was 200 tons per day. Now it is 1,000 tons per day. There were two elements to that order. Second was, there are certain industries which cannot use natural gas as a substitute for LPG. So the question is, one, what was the average per day consumption of these industries? That is number one. Number two, why the need to increase it to 1,000 tons per day? Number two. And number three is, what are those industries that cannot, substitute for natural gas? One question for the MSME industry, Dr. Rajneesh, sir. Building up on Deepak's question, what are those raw materials which are now pinching the industry? We will take answers first, then we will proceed for other questions. I think I request Randhir ji to first give his answers because he has to go for another meeting. Okay, first Rajesh, coming to your question. See, as far as our position on this conflict in West Asia is concerned,
we've made it aptly clear in several occasions, and we continue to call for de-escalation, dialogue and diplomacy so that we can achieve an early end to this particular conflict. As far as the conversation between Prime Minister and President Donald Trump is concerned, we've given you a short readout of what exactly happened, where again the Prime Minister emphasized they exchanged views on the situation in West Asia, and Prime Minister stressed on the importance of keeping the Strait of Hormuz open and safe and secure. On the sanctions, Sukalp, it was your question? So, okay, both. So, see, as far as energy sourcing is concerned, we have a position. That position has been laid down several occasions. We continue to buy oil from diversified sources, keeping in mind the energy needs, energy security needs of 1.4 billion people, as also the situation that is obtained in the international market and the global situation that we have to deal with. On your question, Sapna, UK, France. So I don't have an update on this. I will keep you posted if there are any developments in this regard. We also had a question regarding from our dear friend there on like-minded countries, how like-minded countries are going to deal with. Again, our energy sourcing is to be done from diversified sources based on policy that we have in place, that meeting the energy needs of 1.4 billion people for us is the most important thing. And in that regard, we also take into account the global situation as also the market conditions. एक सवाल प्रदीप आपका था कि हॉर्मुज स्ट्रेट पे क्या हम बातचीत कर रहे हैं. बिल्कुल, हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारी बातचीत देशों से, कई देशों से हो रही है और हम उसके जरिए सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे जो जहाज वहाँ हैं, पहले 9 जहाज वहाँ से निकल के आए हैं, कुछ जहाज वहाँ पर हैं, हम ये बात तय कर रहे हैं ताकि उनका भी वहाँ से एक सुरक्षित तरीके से वहाँ से पार कर हमारे देश आएँ. जेपी, आपका भी सवाल इसी पे था कि अमेरिका ने जो वहाँ पर जो गतिविधि चल रहा है उनके द्वारा, उसको हम कैसे देखते हैं. तो मैं यही कहना चाहूँगा, और ये बात प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में, अपने बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जब हुई उनकी बातचीत, उसमें भी कहा उन्होंने कि हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते वहाँ से नौ परिवहन वहाँ पर सुरक्षित हो, आज़ाद हो, यही भारत का पक्ष है. और इस बात पर उन्होंने जोर भी दिया जब उनकी बात राष्ट्रपति ट्रंप से हुई. बहुत बहुत धन्यवाद. So I don't have technical details about this particular issue that you raised, but what I can tell you is that we have been buying oil from diversified sources. We'll take 2 questions, 277 and 281, then we'll come for the answer. Hello ma'am, I'm Rituparna from Argus Media. My question is to Sujata ma'am. Last month, Hardeep Singh Puri sir had said that the SPR is 70% full. Any update on how much is the amount there? Thank you. हेलो मैम, माय नेम इज मिस्टर अमित, टाइम्स टुडे. मेरा एक सवाल है कि जो आप एलपीजी के आंकड़े आज दिखा रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे आज भी दिल्ली जैसे शहर में 3,500 से 4,000 की ब्लैक हो रही है. क्या ये आंकड़े सिर्फ कागजों पे ही हैं या सच में पर्याप्त मात्रा में इसके लिए कुछ कार्रवाई की जा रही है सरकार की तरफ से? 187. Ma'am, I'm Akhilesh Suman from DD News. My question is to Sri Ranjit Jaiswalji. Sir, is there any consultation among the Quad members? Because Marco Rubio is coming to India next month, I think. So you told that External Affairs Minister also talked to Australian Foreign Minister. So has there been any formal or informal talk about holding Quad, Foreign Ministers meeting next month? And my another question is with Sri Mukesh Mangalji. That sir, to you, that just for a reminder that how many ships are still stranded in the Strait of Hormuz,
how many LPG tankers are there, how many crude tankers are there, how many logistical, because we forget in the beginning you told something. And the sailors, the people who are on the ships, how they are being given, smooth supply of essential items. Will take reply from Mukesh. So, thank you. So I informed, I think on last working day, that total 15 ships are there in the Strait of Hormuz, which are either Indian flagged or Indian owned vessels. So this is the number of Indian these vessels. As far as this, how we are sending the food, etc., to the Indian seafarers, basically it's not the question of Indian seafarers, but it is given to all the seafarers. And there are, the ships are carrying the, ये रसद होती है, इसको लेके चलते हैं अपने साथ, और अगर कोई कमी होती तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है, वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है पोर्ट से, उसका कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज शिप टू शिप ट्रांसफ़र नहीं होता, वो दूसरे छोटे जहाज से आ जाता है. अगर किसी में अगर इस तरह का रसद कम हो गया तो देयर आर प्रोटोकॉल्स, दे विल इन्फॉर्म एंड फ्रॉम नियर बाई पोर्ट इट विल कम. सो वो दिक्कत नहीं आता. एज रिगार्ड टू number of oil tankers and number of those tankers, right now I don't have details, but maybe tomorrow I'll give if possible. Thank you, Mukesh ji. You want to leave? Yeah. Thank you. मेरा कुछ important meeting है, so if you permit me. I mistook Randeep ji for going, but actually I think he has a question. So I don't have an update for you on the Quad issue. As and when we have an update, we will surely keep you in the loop. Having said that, this particular session is focused on West Asia. Other questions are for me to answer either on Thursday or Friday. This Friday we'll have a press conference where I can take all these questions in greater detail. Thank you. Thank you. Now we'll take answers from Strait. The first question was regarding the allocation for, C3, C4 molecules. So 800 has been increased to 1,000 tons. The other question that was asked was the price stabilization fund. I'm not aware of anything like that. And the bookings vary from something like 45 lakh on a holiday to something like 88 lakh that I have told you some time back. So, but on an average it is like something like 50-55 lakh daily bookings. ऑनलाइन बुकिंग में ये बात ठीक है कि शुरू में जब पैनिक हुआ था तब एकदम से बुकिंग सर्ज हुई थी और जिसकी वजह से कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से कुछ बुकिंग में प्रॉब्लम आई थी, बट उसको ठीक कर लिया गया है कंपनियों के द्वारा. नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज की हैं, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज की हैं और अपने कॉल सेंटर्स को काफ़ी स्ट्रेंथन किया है. एक्साइज ड्यूटी के बारे में मे बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कैन गिव एन इनपुट. सीबीजी के बारे में मुझसे पूछा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सीबीजी ऑब्लिगेशन इट वाज वॉलंटरी टिल 24-25, लेकिन 2025-26 से ये जो है सीबीजी का यूज़ को मैंडेटरी करने की बात कही गई थी. 1%, 3% और 4% ऑफ द टोटल सीएनजी और द पीएनजी कंजम्पशन. और ये फिगर मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक लगभग 82,000 टन ऑफ सीबीजी, 82,000 टन सीबीजी हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने प्रोक्योर किया है. एंड यही फिगर कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड 2024-25 में लगभग 42,700 टन थी. इसके अलावा लगभग 200 सीबीजी प्लांट कमीशन हो चुके हैं और लगभग 317 सीबीजी प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है. एक क्वेश्चन मुझसे आपने पूछा कि यही 1000 टन जो C3 C4 मॉलिक्यूल से रिलेटेड, उसके बारे में मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि जैसा मैंने अभी आपको ब्रीफ में बताया कि एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट हुआ. उस जॉइंट वर्किंग ग्रुप में कंसर्न मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे. अब जैसा कि आप जानते हैं वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारा एलपीजी सप्लाईज अफेक्ट हुआ है और उसी की वजह से कमर्शियल को 100% नहीं हो रहा है और 70% हुआ है.
लेकिन यहाँ पे सप्लाई चेन्स अफेक्टेड थी, जैसे फार्मा है या कुछ ऐसे क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए डिसीजन लिया गया कि जो C3C4 एलपीजी पूल में C3C4 मॉलिक्यूल जा रहे थे, उनमें से कुछ इस सेक्टर को और इस इंडस्ट्री को भी दिए जाएं। बट ये किसको देना है, we decided overall, but then how much and to whom is to be given is decided by the department concerned. आपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व के बारे में बोला, दिस इज अ वेरी डायनेमिक फिगर, और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा रिजर्व है वो सिर्फ एसपीआर में ही नहीं होता है, वो टर्मिनल्स में भी होता है, वो रिफाइनरीज में भी होता है, वो पाइपलाइंस में भी होता है, हमारे डीलर्स के पास उनके टैंक्स में भी है, ट्रांजिट में भी होता है. सो व्हाट आई विल से दैट वी हैव अ सफिशिएंट स्टॉक rather than going into the specific figures. आपने कहा सिलेंडर्स को लेते हुए ब्लैक मार्केटिंग या उससे चलती परेशानी, इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है और अब भी कि हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सजग हैं और रेगुलर इंस्पेक्शन कर रही हैं. इसके साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स हैं उनका भी सहयोग मिल रहा है, वो भी रेड्स कर रही हैं. इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पोर्टल हैं, उनके टोल फ्री नंबर्स हैं. किसी भी उपभोक्ता को अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वहां पर वो अपना ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं. We are looking into all the grievances and we are trying to resolve all the issues which are posted to us or to the oil marketing companies. Thank you. We had one more hand, 133. Then we'll take answers from MSME Ministry. Hi, my name is Aishwarya from Business Today. One question is to Ranveer sir. So there's a report which says that US is ending the waiver as far as Iran shipments are concerned, crude, etc. being sourced from there. Any perspective on that? And another question to Sujata ma'am is that ma'am, so since the crisis began, how much LPG in total and crude in total have we imported so far? If you can give a total figure for both of these. Thank you. Okay, Dr. Rajneesh, we'll take answers from you. Yeah, Sapna, you wanted to know about ECLGS kind of a mechanism. So the ministry has stepped up its operations as far as the credit guarantee schemes are concerned. As I mentioned, more than 93,000 crores have been provided in the form of credit guarantees to the micro and small enterprises in the month of February and March. And similarly, the operations on threats have also been very robust. We are in constant touch with the Department of Financial Services regarding the ECLGS kind of a mechanism. So at an appropriate stage, I'll be in a position to share further details on this. As far as the question on raw material supplies and what kind of mechanism we have to address it. First of all, as I mentioned, these field offices of the Ministry of MSME, they are in constant touch with the MSME associations, and NSIC, which is one of the PSUs with the ministry, it provides domestic bulk raw materials to the micro, small and medium enterprises. So in the last 3 months, more than 1 lakh metric ton of raw material has been provided. And if we look at the figures of March on a year-to-year basis, 12.5% increase has happened there. We share the inputs that we receive from the field formations with the counterpart ministries. And for example, in context of the polymers, the import duty has been now reduced from 7% to 0%. So these are some of the measures that we take. Randirji? So Aishwarya, on your question, I don't have any perspective on that. As far as an update on this particular issue is concerned, I think the US spokesperson or US embassy here would be in a better position to answer your question. Thank you. Sujata? See, the purchase, I don't have the figures right now कि एक महीने में कितना crude और LPG purchase हुआ है, but what I will like to tell you is that it's a continuous process and it depends on what is the product available with them and what they need from the market. Thank you. If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.